Good morning, everyone. We are here with BK, chapter number 2, accounts of not for profit concern. So in the last lecture, we have solved one problem. A simple problem was there. Okay, today we are going to solve the another problem. So today we will going to continue with the practical problem. So first practical problem we will going to see of accounts of not for profit concern. So the first problem is problem number 4 from your textbook. Problem number 4, page number 116 of your textbook. I hope everyone is there with the textbook. So following is the receipt and payment account of Satara Sports Club, Satara. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Okay, so the information given is the receipt and payment account of Satara Sports Club, which is there in Satara. Of this sports club, income expenditure account is to be prepared by you, okay, and for the year ending 31st March 2019. So only income and expenditure account is set to prepare, which means there will be no balance sheet. इस प्रॉब्लम में आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाओगे, there will be no balance sheet. Okay, so whenever the question is asked, so read the question properly, because if you are, even if you will going to prepare balance sheet, it will be counted in a working notes and no marks will be given on that. Okay, because it is clearly mentioned you have to prepare income and expenditure account. Balance sheet is not mentioned. Okay, so this is a question. Receipt and payment account is to you, and from this receipt and payment account you will going to prepare income and expenditure account. Okay, so as you can see, two sides there, receipt and payment side. Receipt side there or payment side there. Now whenever you will going to start recording the entries in income and expenditure account, start from the always from the payment side. कौन सा साइड से स्टार्ट करो? हमेशा पेमेंट साइड से स्टार्ट करो, ठीक है, because very less adjustments are there on payment side, whereas on the receipt side आपको ज्यादा adjustments मिलेंगे which are related to receipt side. Okay, so payment side से ही start करो हमेशा. The next adjustments, few adjustments are given to you. Okay, the first adjustment is of outstanding subscription, then outstanding rent, entrance fee, and stock of sports materials. So a few 4 adjustments are there. Okay, so as we are doing in final account, even here we are going to star mark on which the adjustments are given, so that you will be able to write the amount in the first column and there will be no confusion. Okay, now the very first adjustment is outstanding subscription, which means the adjustment is there on subscription. ठीक है, किस पे adjustment है? Subscription पे adjustment है, which means you will going to star mark subscription. Okay, now the next adjustment, outstanding rent. किस पे adjustment है? Rent पे adjustment है. So what you will going to do? You will going to star mark rent. तो आपका rent कहाँ पे है? Second में, ठीक है, यहाँ पे. So you will going to star mark your rent. Okay, now the next adjustment is on entrance fee. So entrance fee, where is the entrance fee? Okay, so entrance fee यहाँ पे है, where you will going to star mark your entrance fee. And the next is sports, stock of sports material. So sports material पे adjustment दिया है, so you will going to star mark the sports material which is there on payment side. So if you are going to see over here, buy sports material purchased, it is there. Okay, so you will going to star mark this. Only 4 adjustments hai. Okay, first is of the which is related to subscription, second is related to rent, third is related to entrance fee, and fourth is related to sports material.
Okay. Now, I hope everyone has prepared the income and expenditure account. If not, then I'm giving them 2 minutes. You can prepare this income and expenditure account. So if you will see, now यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जब आप लिखोगे you will going to write income and expenditure account, right? But when you will going to prepare, then the first will be your expenditure and then will be your income. So बहुत बार what kid does, they write over here income and expenditure account and they write this side as an income and this side as an expenditure, which is wrong. As well as if income expenditure is there, तो बच्चे यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे इनकम, तो ये करेक्ट लिखते हैं, पर यहाँ पे व्हाट दे डू, दे मेंशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, which is wrong. Okay, so when you will going to write, see it properly, you are giving the proper. Okay, so the please see to this small things, यहाँ पे mistake नहीं होना चाहिए. Okay, so I hope everyone's income and expenditure account is ready. Now in this question only we are preparing income and expenditure account. So हमारा जो पूरा focus होगा income and expenditure account पे ही होगा. Okay, now one by one we will going to start solving the putting the entry items in the income and expenditure account. So as I said, we will going to start with the पेमेंट साइड. कौन सी साइड से स्टार्ट करना है आपको? पेमेंट साइड से स्टार्ट करो हमेशा पहले. तो सबसे पहला जो आइटम दिया है वो क्या है? इट इज बाय सैलरीज and it is given 5,000. Now whatever the items which are given in the payment side, it will be recorded on the expenditure side of income and expenditure account. कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? एक्सपेंडिचर साइड में या तो बैलेंस शीट में. ठीक है, बैलेंस शीट में होंगे. ठीक है, तो इनकम साइड में कोई भी आइटम्स नहीं जाएगा अगर वो पेमेंट साइड में दिया है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट. ठीक है, so whatever item which is there on the payment side of receipt and payment account, it will be recorded in the expenditure side of income and expenditure account or in the balance sheet. Okay, now we are going to start with the first one. So the very first is salaries. So by salaries given 5,000 और कोई adjustment नहीं है salaries पे, which means you will going to directly record this on the income expenditure side of the income and expenditure account. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आइटम ही क्या है? सैलरी, और उसका जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखा है? इट इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेकंड कॉलम ऑफ अमाउंट. ओके, सो क्यों? क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन सैलरीज. ओके, सिंपल, वहां से उठाना है और एक्सपेंडिचर साइड में डाल देना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय रेंट. व्हाट इज दिस? बाय रेंट. ओके, ना बाय रेंट ऑलरेडी हमने स्टार मार्क किया है क्योंकि उस पे जो एडजस्टमेंट है वो इस नीचे भी दिया है. एज वेल एज अगर आप बाजू में देखोगे तो यहाँ पे भी बोला गया है इंक्लूडिंग 2004 2017 18. ओके, इट इज ऑल्सो मेंशन, विच मीन्स आपको ये जो रेंट है उसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द अमाउंट. अब यहाँ पे इट इज देयर ऑन द पेमेंट साइड, which means when you will going to record it, you will going to record it on the expenditure side of income and expenditure account. Okay, so आपका जो expenditure side है, you will going to see over here, here it is mentioned to rent and the amount is mentioned in the first column. जो 5,000 पीछे दिया था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया है? अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में 5,000. Now the next is by electricity charges. By electricity charges 1,450 is given. Now no adjustment is there, which means you will directly going to record this in the expenditure side of income and expenditure account. So two electricity charges 1,450. ठीक है, वहां पे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, यहाँ पे विल गोइंग टू राइट टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450. Okay, no adjustment was there, say directly in the second column. Now the next item is by fixed deposit. Now fixed deposit is a investment, it is an asset which will be recorded in the balance sheet के asset side में. Now in this problem we are not preparing balance sheet,
which means this fixed deposit will not be recorded anywhere, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के एसेट में. दैट्स व्हाई फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, which means ये फिक्स्ड डिपॉजिट we will not going to record anywhere. Okay, now the next is printing and stationery. So printing and stationery given 750. Okay, so again printing and stationery, there is no adjustment, which means you will going to directly record this on the expenditure side of income and expenditure account. So if you will see over here, expenditure mein they have recorded two printing and stationery 750. Okay, now the next is by general expenses. Okay, by general expenses. Now general expenses में कोई adjustment नहीं था नीचे, right? But here if you will going to see, बाजू में कहा है including 500 paid for next year, including 500 paid for next year, which means this is an adjustment which is there with the general expense, right? So you will going to record this, and तो आप जब amount डालोगे तो it will be recorded in the first column of the amount. Okay, so if you will see over here, we had recorded the general expenses. कहाँ पे record किया है आपने? Expenditure में, क्योंकि payment side में दिया था, लेकिन amount जो है वो कौन सी column में है? First column में है 5,500. Now the next is by sports material purchased. By sports material purchased. Okay, so in the last lecture I had explained you the stock of stationery, the stock of drugs. ठीक है, तो ये भी वही पार्ट है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ठीक है, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड आउटस्टैंडिंग एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है, ये वही फॉर्मेट है जो आप बनाओगे इन दिस प्रॉब्लम. ओके, सो you will going to record this and in the same way, in the same format. ठीक है, जो हमने सीखा था in the last lecture. So if you will see over here, what I have mentioned, two stock material. Okay, so to stock material purchase 40,000, उसमें हमने add opening किया, less closing किया. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप directly to stock material, stock of sports material, opening, add purchase, less closing, आप वैसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो. बोथ द वे इट्स करेक्ट. ओके, आप परचेस में ओपनिंग ऐड करके लेस कर सकते हो क्लोजिंग, या आप ओपनिंग में परचेस ऐड करके लेस कर सकते हो क्लोजिंग. बोथ द वे इट इज करेक्ट. ओके, so here I have done in the second way. Okay, so to stock of sports material purchased, I have recorded in the first column कितना परचेस किया है? 40,000. ओके, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड करो या परचेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, बोथ द वे इट्स करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट इज व्हिच इज बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है ना, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आपको नहीं लिखना है, बट व्हाट यू आर गोइंग टू मेंशन, you are going to mention cash in hand and cash at bank. और cash in hand, cash at bank, they both are the assets and it will be recorded on the balance sheet के asset side. पर यहाँ पे हम balance sheet नहीं बना रहे हैं, which means ये जो amount है, ये जो cash in hand और cash at bank है, इसका effect कहीं भी नहीं जाएगा. अगर हम balance sheet बनाते हैं तो इसको हम asset side में record करते हैं. ठीक है, is it clear everyone? Payment side का part समझा? Any doubt is there? I hope everyone is recording with me. They are doing this, they're solving this problem by themselves. Okay. Now we will start with the receipt side. Now on the receipt side, the very first item is always balance brought down, in which there might be cash in hand, cash at bank, or only cash. Sometimes cash is given. Okay. Now ये जो first item होता है, इसका record कहीं पे भी नहीं जाता है. ठीक है, you will never going to record the opening balance of cash in hand or cash at bank if it is given on receipt side. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है. अब ये जो दिया है ये करंट ईयर का है, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ये जो है ये लास्ट ईयर का है. ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर का है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं हमारे करंट ईयर में.
ठीक है. So if the balance brought down is given on the receipt side, then you will not going to record it in the balance sheet. Okay. Whereas if the pay balance carried down यानी cash in hand और cash at bank या balance carried down अगर दिया है payment side में, then it will be treated as a cash and you will going to record it on the balance sheet के asset side, क्योंकि वो current year का है और ये last year का है, इसलिए इसको हम record नहीं करते हैं. Is it clear everyone? Now the next is subscription. The next is subscription. So again 3-year subscription is given. ठीक है. 2017-18 का 4,000 दिया है, 18-19 का 44,500 दिया है और 2019-20 का 3,500 दिया है. Total is 52,000. Okay. So 3 साल का subscription दिया है. The very first thing you will going to find out which is your current year. आपका current year कौन सा है तीनों में से? Can anyone tell me which is your current year? Okay, correct. It's 2018-19. Which one is your current year? 2018-19, right? ये आपका current year है. Which means ये जो है वो मेरा previous year है और ये जो है वो मेरा next year है. ठीक है. So this is a one way. और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो find out your current year. The best way is अगर आपको 3 amount दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से हमेशा जो सबसे बड़ा वाला जो amount होता है ना, वो हमेशा current year का ही होता है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा amount कौन सा है? 44,500. ठीक है. तो ये जो बड़ा अमाउंट है ये किसका है? करंट ईयर का. So you can find out current year in this way also. ठीक है. But being a good, ठीक है, it will be good अगर आप find out करोगे by yourself which is your current year. So in this your current year is 2018-19. Now by subscription, क्योंकि ये receipt side में दिया है तो आप इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? जितने भी आइटम्स है रिसीप्ट साइड के, ये आप रिकॉर्ड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में. कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, राइट? सो द वेरी फर्स्ट आइटम यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड इज सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट ऑन दी इनकम साइड. ठीक है. तो यू विल सी ओवर हियर इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन कितना था? 44,500. मेरे पास 3 साल से, उसमें से मैंने करंट ईयर फाइंड आउट किया और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो ही मैं यहाँ पे लिखूंगी इन द फर्स्ट कॉलम इफ द एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन सब्सक्रिप्शन. सो इन दिस प्रॉब्लम एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन सब्सक्रिप्शन, दैट्स व्हाई वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ इन अमाउंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज to entrance fee. The next is to entrance fee. Okay, so entrance fee is given 8,000. How much is given? Entrance fee is given 8,000. Okay, so again entrance fee income side में जाएगा. It is recorded in the income side of the income and expenditure account. Now यहाँ पे हमने adjustment देखा था जो entrance fee पे दिया है. ठीक है. Now sometimes the adjustment is given only to give you the information. आपको information देने के लिए. यहाँ पे भी जो information दिया है उसने, they have not said it is you have to deduct something or you have to add something. What they have said, entrance fee are to be treated as revenue income. ठीक है. So they had only informed you कि entrance fee is to be treated as a revenue income. ठीक है. और revenue income को कहाँ पे record किया जाता है? In income and expenditure account. ओके. अगर ऐसा कहा जाता है एंट्रेंस फी आर कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटलाइज्ड. ठीक है. कैपिटल इनकम. कौन सा इनकम? कैपिटल इनकम. देन दिस इज द एडजस्टमेंट जहाँ पे आपको डिडक्शन करना पड़ता. पर यहाँ पे क्या बोला है? एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम which means you will going to record the amount of entrance fee, full amount of entrance fee in income and expenditure account only. ठीक है. तो कोई एडिशन या डिडक्शन नहीं होगा. So if you will see over here, they had done nothing. उन्होंने कुछ नहीं किया है. They had written mentioned by entrance fee and they had mentioned the amount 8,000 directly in the second column because the adjustment is given, but it is only an information which is given to you that entrance fee will be treated as a revenue income and revenue income will be recorded in the income and expenditure account only. अगर capital बोला होता तो आप इसको कैपिटल फंड में ऐड करते जो बैलेंस शीट में होता है. Is it clear everyone? So sometimes the adjustments are only given in order to give you the information. There will be no need of reduction or addition.
Now the next is to donation for building fund. Now this is the donation for building fund which is 70,000. Okay, so in the last lecture we have saw adjustments. हमने adjustments कुछ देखे थे, हमने कुछ new terms देखे थे जहाँ पे हमने देखा था specific donation and general donation. ठीक है, so this is this donation which is specifically given for the building fund. किसके लिए दिया है? building fund. तो अगर कोई donation दिया है बिल्डिंग फंड के लिए दिया है, ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. ठीक है सर, और अगर सिर्फ डोनेशन बोला होता तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट इन दिस प्रॉब्लम इट इज क्लियरली मेंशन द डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड. किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए है, विच मीन्स यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट बैलेंस शीट liability side, balance sheet के liability side. Now we are not preparing balance sheet, which means we are not going to record this donation anywhere. हम ये donation कहीं पे भी record नहीं करेंगे. Is it clear everyone? So if you will see over here, आपको donation दिख रहा है? आपको donation नहीं दिख रहा है क्योंकि it is clearly mentioned donation is there for building fund. Okay. Now the next item is interest. To interest is an income. So interest कहाँ पे record होता है? Interest is recorded in the income side. क्योंकि यहाँ पे receipt side में which means interest मिला है, so it will be recorded in income side of income and expenditure account. और क्योंकि कोई adjustment नहीं था, that's why you will going to write a recorded in the second column of income. Okay, so by interest 600. Okay. Now the next item and very important, to sale of furniture, book value 8,000 and 4,500. Okay, so it is given 4,500 amount दिया है और आपको बोला है furniture sale किया है और bracket में it is given book value 8,000. Okay, now I will going to explain you this point when we will going to record it in afterwards. Okay, I will going to explain you this point afterward when we will going to actually record this. Okay, adjustment जितने भी adjustments हैं वो होने के बाद I will going to explain you this point of sale of furniture. Okay, so till this I hope everything is clear to you. All the payments item will be recorded only on the expenditure side या balance sheet में. ठीक है, और जितने भी receipt है it will be recorded either in the income side or balance sheet. Is it clear everyone? कोई doubt है अभी तक? Okay, then now we will going to go with the adjustments. Just one by one we will going to see the adjustments. Now the very first adjustment which is given is outstanding subscription for current year. Okay, so if the outstanding subscription is given for current year, which means it will going to show two effects of this. ठीक है, अगर current year का है तो आप कितने इफेक्ट दिखाओगे? 2 इफेक्ट दिखाओगे. तो if the outstanding subscription is for current year, 2 effect will be there. The very first effect will be you will going to add it to the subscription which is recorded in the income side of income and expenditure account. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 44,500, we have already recorded 44,500 over here. ठीक है, तो उसमें ही हमने वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का था वो एड अप किया, तो इट इज 4,500, राइट, 4,500. तो आउटर में इट विल बी 49,000. आउटर में कितना आया? 49,000. द सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सेकेंड इफेक्ट कैन एनीवन टेल मी? सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है, the first effect you will going to add it to the subscription which is there in the income side of income and expenditure account, and where you will going to show the second effect. Okay, so correct answer is given by Preeti, that is asset side. Okay, so two effects, outstanding subscription current year. Okay, first effect, add to the subscription on the income side, and second effect, it will be shown on the balance sheet asset side. Now in this we are not preparing any balance sheet, which means we will not going to record the second effect anywhere. Okay, now the next adjustment is outstanding rent for current year
amounted rupees 1000. ठीक है. Now rent पे two adjustments are there if you will see. ठीक है, दो adjustments है. एक तो which is given in the adjustment itself, and if you will see in the question also it is said including 2000 for 2017-18. So 17-18 is my previous year. ओके, तो बाय रेंट इट इज गिवन 5000, जिसमें से 2000 कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, राइट. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू डिडक्ट दिस 2000 फ्रॉम 5000. ओके, so if you will see over here rent is given to rent 5000. तो पहले करंट ईयर का ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगी, जो प्रीवियस ईयर का है वो क्या करूंगी, लेस करूंगी, राइट. तो इफ यू विल सी ओवर हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड लेस आउटस्टैंडिंग 2017-18 which is 2000. ओके, और उसके बाद में ऐड मेंशन ऐड आउटस्टैंडिंग 2018-19 जो मेरा करंट ईयर है 1000. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है इंक्लूडिंग 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 करके कुछ, तो इंक्लूडिंग वर्ड आया which means you have to deduct it from the amount which is there. ठीक है, तो 5000 you will going to less outstanding which is of previous year and you will going to add outstanding which is of current year. Okay, so plus minus करने के बाद what is the result, whatever the amount is there you will going to record it in the second column of the amount. Okay, is it clear to everyone? Now again outstanding rent current year का है तो उसका second effect जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, कोई बता सकता है? Outstanding rent जो current year का है उसका two effect होगा, so where you will going to show the second effect of this outstanding rent. Can anyone tell me? Correct, Shivam. Liability side of balance sheet, because rent is an expenditure. Our expenditures effect, the outstanding effect will be shown on the liability side. Okay. Now don't get confused over here because यहाँ पे rent भी outstanding बोला है, ठीक है, as well यहाँ पे subscription भी outstanding है, right? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो रेंट है इट इज एन एक्सपेंडिचर, whereas ये जो सब्सक्रिप्शन है इनकम है. तो अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होता है देन इट इज रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट के एसेट साइड, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया है, राइट. इन द सिमिलर वे रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, तो अगर रेंट एक्सपेंडिचर है या कोई भी एक्सपेंडिचर है और वो आउटस्टैंडिंग है तो इसका इफेक्ट विल गोइंग टू शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं इसके वजह से मार्क्स जाते हैं, तो यू शुड बी फोकस्ड व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेवेन्यू इनकम है व्हिच मींस एज इट इज आपको रिकॉर्ड करना है, नथिंग इज टू बी एडेड और डिडक्टेड. ओके, next stock of sports material as on 1st April 2018 6,000 and on 31st March 2019 14,000. Okay, so 1st April which means this is my opening and this is March which means this is my closing. So opening stock of material, sports material and closing stock of sports material. So this 6,000 is my opening stock of sport material and 31st March को जो दिया है this is my closing stock of sports material. Okay, so हमने stock of material we have learned in the last lecture how we have to record it. Now either you can record in the way we have learned in the last lecture or you can record in the way which is I am showing in this problem. Okay, so two stock of sports material purchase जो हमने पेमेंट साइड में देखा था ऑन द पेमेंट साइड. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया था कितने का, 40,000 का, राइट. तो वो जो 40,000 है इसको हमने रिकॉर्ड किया था एक्सपेंडिचर में. तो 40,000 इन दिस आई हैव एडेड 6,000 ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है एडजस्टमेंट में एंड लेस किया है 14,000 क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया था एडजस्टमेंट में. Okay, now 40,000 plus 6,000 46 and 46,000 minus 14,000 is 32,000. तो जो भी बचा है will be recorded in the second column of the amount. Is it clear to everyone? Stock of sports material purchased, in that you will going to add opening
and you will going to less closing stock. Now, where will be the second effect of closing stock of sports material will be recorded? Where it will be recorded? Where it will be recorded? Asset side. Correct, Shivam. It will be recorded on the asset side. Okay, because it is a closing stock. क्या है वो? Closing stock है किसका? स्पोर्ट्स मटेरियल का. और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो सेकेंड इफेक्ट ऑफ ओनली क्लोजिंग स्टॉक यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड ऑन दी बैलेंस शीट के एसेट साइड में. इज इट क्लियर? नाउ only the one part is remaining, that is of sale of furniture. Other than we have completed all the parts, right? कुछ बचा है? Is anything remaining other than sale of furniture? Yes, correct. General expenses, right? So general expenses, it is clearly mentioned over here. General expenses including 500 paid for next year. If it is paid for next year, which means it is paid in advance, and anything we pay in advance is prepaid. What it is prepaid, which means in general expense the adjustment which is given is of prepaid. Okay, so amount is given general expenses of 5,500. How much it is given? 5,500, and in this 5,500, 500 is paid off the next year, which means you will going to less, as I said, including आया, which means you have to deduct it. ठीक है, तो आप less करोगे जिसमें से general expenses है, तो general expense is over here. So if you will see over here, less prepaid. So 5,500 में से you have deduct this 500. The outer it is how much? 5,000. So 5,500 less 500, whatever will be there, it will be in the second column of amount. Okay, now this prepaid का second effect कहाँ जाएगा? No, not on liability side, बैलेंस शीट के एसेट साइड. कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ओके, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाता है तो प्रीपेड बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. ओके, now the only one part is remaining, that is sale of furniture. Now sale of furniture, it is given 4,500 and book value is given 8,000. Okay, now calculation should be there. So sorry, so here sale of furniture, ठीक है, it is given 4,500 और बुक वैल्यू कितना बोला है? 8,000. बुक वैल्यू कितना बोला है? 8,000, right? Which means whether the furniture is sold at a profit or it is sold at a loss. Given 8,000, what is the book value is given? The book value is given 8,000, यानी कि जो फर्नीचर का कॉस्ट है वो कितना था? 8,000 था, और उसको सेल कितने में किया? 4,500 में. कितने में सेल किया? 4,500. तो क्लियरली पता चलता है कि इट इज अ लॉस. क्या है वो? लॉस है. कितने का लॉस हुआ? 3,500. कितने का लॉस हुआ? क्योंकि अगर 8,000 की चीज को मैं 4,500 में बेच रही हूँ, विच मीन्स क्या फेस कर रही हूँ मैं? आई एम फेसिंग अ लॉस, एंड द लॉस इज ऑफ 3,500. Okay, now whenever in the question, if the information is given
related to sale of furniture, and if the book value is given and the sale amount is given, then आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको 2 अमाउंट्स आर गिवन, सो यू विल नेवर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट। ये आपका जो सेल है ना, जितने में सेल हुआ एसेट, उसको आप कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है? तो 4500 को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। व्हाट वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड, यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड द बुक वैल्यू एंड द लॉस, ठीक है? What you will going to record the book value and the loss. Now ये जो book value है, it will be वो डिडक्ट किया जाता है, लेस किया जाता है फ्रॉम द फर्नीचर, जो एसेट साइड में होता है। नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, व्हिच मींस ये जो बुक वैल्यू उसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ द ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज लॉस। और लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? लॉस इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और कितना लॉस हुआ? 3500। कितना लॉस हुआ? 3500। ओके, सो हियर यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली द लॉस अमाउंट। सेल कितने में हुआ, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। और जो बुक वैल्यू है, यू विल गोइंग टू डिडक्ट द बुक वैल्यू अमाउंट from the asset which is given on the balance sheet. Now, balance sheet is not there, which means you will not going to record the book value. Okay, is it clear to everyone? Any doubt is there in this problem? All the adjustments are clear? A simple problem it was. Anyone is having any doubt? All the points are clear? Okay, so once you have done with the income and expenditure account, then you will going to close the account. Okay, so यहाँ पे भी ज़्यादातर यहाँ पे in this income and expenditure account there might be chances of 50-50. कभी सरप्लस आता है, कभी डेफिसिट आता है, which means कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, कभी इनकम ज्यादा होती है, ठीक है? तो as if you will see the amount, then it is clearly can be seen that आपका जो इनकम साइड है वो ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? इनकम साइड। तो इनकम साइड को अगर मैंने टोटल किया 49,000 plus 8,000 plus 600, the amount which I have got is 57,600. I had recorded the same amount in the total of expenditure. Okay, now once you will going to record the same amount over here, then you will going to deduct all the expenditure which is there, ठीक है? तो 5,000 plus 4,000 plus 1,450 plus 750 plus 5,000 plus 3,500 plus 32,000, इन सबको प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, you will going to deduct that amount from 57,600, and whatever amount you will going to get, it will be your surplus. Okay, so if your income side is more, if your income side is more than your expenditure, whatever answer you will going to get, whatever the amount which you will get, it will be your surplus. आप वो क्या लिखोगे? It will be your surplus. So हम final account में we used to mention net profit, but in income and expenditure you will going to mention surplus. What you will going to mention? Surplus. Okay, so to surplus 5,900. Okay, and this surplus will be recorded in the balance sheet के liability side in capital fund. You will going to add this in the capital fund, which will be there on the balance sheet के liability side. Now here we are not prepared any balance sheet, which means you will not going to record it anywhere, and your problem is done. आपका problem solve हो गया. Is it clear to everyone? So this is the way you will going to solve the problem. Okay, this was a simple problem in which only you have to prepare income and expenditure account. Even in the exam, if only income and expenditure account is asked, तो prepare income and expenditure account only. But if you think कि मुझे सिर्फ एक account बनाने में problem हो रहा है, then you can prepare balance sheet but in a working mode, as a working mode. Okay, is it clear? So in the next lecture, we will going to solve other problems of income and expenditure account. I hope this is
clear? This problem is clear to everyone. So see you in the next lecture.